Kashmir, the proverbial heaven on earth. In recent years, the valley has gone through massive transformation to become an attractive investment destination. Boom in the indigenous economy is one of the reasons behind it. Saffron production, covered under the rupees 400 crore National Saffron Mission in Kashmir, has seen the highest rise in the last quarter century. In 2022, the valley registered the highest tourist arrivals in the last decade. It also saw doubling of horticulture production, so much so that the Government of India has decided to host G20 summit in Kashmir, sending across a global message. However, this is not always how it's been in the valley. Pakistan-backed terrorism kept the valley in the boil for the last 3 decades. In fact, the discourse around Kashmir has always been dominated by Islamic terrorism, genocide of Kashmiri Pandits, and stone pelting on security forces. The issue of genocide of Kashmiri Pandits in the 90s has recently been raked up by the Vivek Agnihotri directed film The Kashmir Files. कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद! As the Vivek Agnihotri film would like us to believe, radical Islam has been the root of cause of unrest in Kashmir. The Pakistan-instigated militancy that began in the early 90s decade of the last century took away lives of more than 50,000 people and left 500,000 Kashmiri Pandits homeless. Amit Raina, a human rights activist who has taken on himself to carry on a legal battle to get death sentence for the dreaded Kashmiri terrorist Yasin Malik, says, आज पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया बाय कमिंग इन सपोर्ट ऑफ अ टेररिस्ट. वो टेररिस्ट जो खुद एडमिट कर चुका है कोर्ट ऑफ लॉ में कि मैं इन्वॉल्व हूँ टेरर फाइनेंस केसेस में. और टेरर फाइनेंस केसेस में देखिए, इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हम नाराज हैं कि टेरर फाइनेंस केसेस का अल्टीमेटली मकसद क्या था कि लोगों की हत्याएं करी जाएं, लोगों को मारा जाए. But after the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution, situation in the valley saw dramatic change. It has seen a drastic decrease in terror activities. However, the return of peace and economic growth to the valley has hit Pakistan where it hurts the most, says Khalid Beg, a progressive Kashmiri Muslim. He says that Pakistan still continues to strike Kashmir with its agenda of radical Islam. Sporadic incidents or violence that are witnessed in Kashmir are evidence of it. See, the fact is, you can never factor out Pakistan, even if it was before 89 when the valley went into turmoil, and that turmoil continued for till 33 years. The financial and ideological support will always be there because it is tied to the very existence of the nation, right? Two-nation theory is the vajood on which it thrives, and Kashmir, being the Muslim majority area in India, is where it's the Achilles heel, right? And you want to constantly prove to yourself that however flawed that idea is, however many lives you've killed, how many ever communities you've erased, you want to stick to it. So that financial assistance is there. Khalid Beg argues that the recent incidents of violence are nothing but last-ditch attempts by Pakistan to assert its dominance in the valley. So this I also feel is a last-ditch attempt to sort of hit back and say that no, we still hold the cards here. We will not allow for normalcy. And if it means taking down the most low-lying fruits and, going after civilians who are just there to earn their bread and butter and first target the ones, for their religious identity, they'll go for it. So it's a very ruthless enterprise that way. It's a very ruthless calling. Of course, it does have elements within the valley who give it their moral support, who justify it in their head. And that obviously needs to be challenged, and that intellectual challenge needs to be taken to them, whether it's in the universities of India like JNU in the political sciences who give them the support, whether it's in Jadavpur, whether it's in TES, who are their allies, that needs to be taken to task. But the fact that he admits that poverty has been the lever Pakistan used to incite violence in the valley. Khalid's views find takers among the youth who have returned to mainstream after spending a significant life of their lives as stone pelters. You would, mind would boggle at these young kids, all from poor backgrounds. One can do the research on this. I've studied it very deeply. And you had no rich
person indulging in that. Wajahat Farooq Bhatt, who is a former stone pelter, has returned to the mainstream, shares his experience as he had with politicians who kindle unrest in the valley. In 2016 and 2017 के मिड में मैं एक ऑफिसर थे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर, his name is इम्तियाज हुसैन सर, एंड उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ड्यूरिंग एनसीसी डेज, मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था, सो आई डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली एनसीसी इज, तो उसी दौरान उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने इनवाइट किया मुझे अपने ऑफिस में. सो जब मैं उनके ऑफिस में गया था, वाज लाइक पता नहीं इनको पता होगा कि दैट क्या बोलते हैं उसको स्टोन पेलिंग करता है या मुझे एक पीएसए देंगे या मुझे जेल में भर देंगे. तो हमारा जो पर्सपेक्टिव था सोचने का वो डेफिनेटली कुछ लोगों ने गलत किया था. जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी है वैसी है. जब मैं वहां पे गया, जब उनसे उनके ऑफिस गया तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छे से विश किया, अच्छे से बात की एंड बोला बैठने के लिए बोला था. बस लाइक अच्छा ये ऑफिसर, मैंने तो कुछ और ही सुना था उनके बारे में. देन उन्होंने चाय बुलाई एंड उनसे बात की तो उन्होंने पहला मुझे ये बात कही कि आपको पता वजह सबसे बड़ी सबसे जो आसान काम क्या है वो कोई भी कर सकता है. लाइक क्या, ही टोल्ड मी दैट सबसे आसान काम है वो है मरना. एंड लाइक सर आप क्या बता रहे हो? बोला आसान काम इसलिए कि किसी का दिमाग खराब हो गया, वो जेल में इसने छलांग मारी, जहर खा लिया या बंदूक उठाई, विद नो टाइम उसका काम तमाम हो गया, मर गया. बट सबसे जो मुश्किल काम क्या है वो है जीना, और फिर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए जीना और उसके बाद कंट्रीब्यूट करना लोगों के लिए. कंट्रीब्यूट ये करना कि आपको आपकी वजह से किसी को फायदा मिले, मदद मिले, तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सबसे बड़ा जिहाद वही है. और कहीं ना कहीं हद तक वो मेरी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था. Wajahat Farooq Bhatt says that there was a time when stone pelting was glorified by many in the valley. आई एम अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर. मैं कहीं ना कहीं हद तक जो हमारा एक एनवायरनमेंट था, हमारा जो माहौल था, कहीं ना कहीं हद तक 2008 में, 2010 में, 2012, 2014 में ये चीजें नॉर्मल थी हमारे यहाँ पे. जो भी स्टोन पेल्टिंग करता था इसको नॉर्मल चीज थी वहाँ पे. और जो फिर उसके बाद जो वॉलेंस उसको ऊपर जाता था उसको हम हीरो मानते थे. जो हमारे लिए यही जो एक्सट्रीमिज्म या मिलिटेंसी में जाता था हमारे लिए वो हीरो बनता था. He also says that no parents in Kashmir encourage their children to engage in anti-India activities. It is a particular section in the society that subscribes to the idea of violence and leads the young Kashmiris astray. Young, impressionable minds are fed with an imaginary battle line drawn between them and their own nation, India. Slowly, it leads them to acts like stone pelting. This is the first step towards insurgency. हमें ना एक ख्वाब दिखाए जाते थे, एक आजादी के ख्वाब. जब हमें पता चला, जब मैंने खुद से फिर सवाल किया, चलो ठीक है आजादी, हमारे पास कौन सी आजादी नहीं है. यहाँ पे एक 10 साल पहले अगर आप देखोगे एक मस्जिद थी, आज उसी मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं. तो हर कोई यहाँ पे नमाज पढ़ने जा रहा है, किसी को रोक टोक नहीं है. मेरे को जो भी कोई मसला होता है मैं अपनी ग्रीवेंस में कहीं पे भी जा सकता हूँ. यहाँ पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ. हमारे ही लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं 47 से. तो मुझे किस चीज की आजादी? तो ये मुझे आजादी फिर समझ में, जो पहले ये था आजादी पता नहीं क्या होगा, बट उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ की डेवलपमेंट. फिर मैंने कंपेयर किया कि जो उस वाले जो सो कॉल्ड दे आर कॉलिंग दैट प्लेस आजाद कश्मीर, बट एक्चुअल में वो तो गुलामी में रह रहे हैं. हम तो असल में तो हम ही आजाद हैं. Wajahat realized that it is the Indian security force that are doing commendable job to rebuild Kashmir shattered by decades of violence and strife. When he got a closer look at the functions of the security forces, he saw thousands of Kashmiris seeking refuge in the security forces, even for works related to education and development. मैं फौज को इसलिए नहीं देखता हूँ कि जो अगर रेस्ट ऑफ कंट्री में देखोगे दैट फौज बॉर्डरों पे बैठती है. फौज का काम होता है कि बस अपनी कंट्री को डिफेंड करना. बट मैं समझता हूँ कि बीइंग ए कश्मीरी मुस्लिम, मैं समझता हूँ कि दैट जो फौज ने यहाँ पे काम किया है, जो एजुकेशन सिस्टम अभी हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल, हमारा जो निज़ाम यहाँ पे, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के बिजनेस सेक्टर्स, यहाँ पे टूरिज्म, यहाँ के यूथ को एम्पावर करना सद्भावना के प्रोजेक्ट से, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना. तो कहीं ना कहीं तक मैं समझता हूँ कि आर्मी यहाँ पे एक सेपरेट एक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक स्टेक होल्डर है जिसका कंट्रीब्यूशन इतना है
तो मैं उनको कह सकता, मैं उनको आर्मी तो नहीं बोलता, बट डेफिनेटली मैं उनको बोलता हूँ कि दैट दे आर द रियल saviors of Kashmiri Muslims, Kashmiri people. Wajahat himself returned to normal life after he met a police officer named Imtiaz, who taught him the true meaning of life. He also showed him the true meaning of independence of Kashmiris. He understood that it is the part of Kashmir which is known as independent Kashmir is actually that is enslaved. I don't know कि आपसे कल अभी बात कर रहा हूँ, कल शायद मैं भी उनका टारगेट होऊंगा, बट यस आई कैन से दैट कि जो कश्मीर 3 साल पहले जो था उसमें क्या था, दैट कोई भी महफूज नहीं था, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं था, और कोई भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम करते थे कहीं ना हद तक एक कॉम्प्रोमाइज होता था, एक जो आइडिया ऑफ इंडिया या कश्मीरी जिसको कहते हैं हम, तो वो कहीं ना कहीं हद तक खत्म हो हुई थी। बट कहीं ना कहीं हद तक हमें एक आई कैन से दैट उसको क्या बोल सकते हैं हम, ये एक आश्वासन मिला है ना, हमें लगता है कहीं ना कहीं हद तक हम महफूज है। चलो ठीक है, जो हमें हमारे जो हम जैसे लोग हैं यहाँ पे उनके पीछे लगे हुए थे हाथ धो के, मतलब भी यहाँ पे पीसफुल काम करेगा, जो भी आइडिया ऑफ इंडिया काम करेगा, जो भी रेडिकलिज्म काम करेगा, जो भी ड्रग अब्यूज की उसको अगेंस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं तक उसको टारगेट किया जाता था। Wajahat now runs an NGO named Save Youth, Save Life and works assiduously to show youth the path of success and peace by organizing various social awareness activities and campaigns. That जब हमने स्टार्ट किया था 2016 के बाद हमने जो काम स्टार्ट किया था, तो काफी हद तक हमने नॉर्थ कश्मीर से स्टार्ट किया था, फिर साउथ कश्मीर, फिर सेंट्रल कश्मीर। जब हमने स्टार्ट में किया तो हमारा कहीं ना कहीं हद तक रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था ग्राउंड में, और धीरे धीरे हमने फिर नॉर्थ कश्मीर, पूरा नॉर्थ कश्मीर हमने कवर किया था, एंड वी ऑर्गेनाइज्ड एट दैट टाइम स्पोर्ट्स फेस्टिवल, बहुत अच्छे 2018 में हमने ऑर्गेनाइज किया था। काफी हद तक उसमें यूथ एंगेज हुई थी, एंड डेफिनेटली इनको प्लेटफॉर्म मिला था। उसी दौरान हमने एक इनिशिएटिव उठाया था यूथ पार्लियामेंट करके, जहाँ पे हमने यहाँ के यूथों को डायरेक्टली एक राउंड टेबल कनेक्ट करते थे हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और पुलिस के, जहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हैं। एंड हमने एक काम किया था, एक ब्रिज का काम किया। Wajahat and Khalid are among the thousands of youth who are the future of the valley. They are the ones who have ushered in a new dawn of peace, progress and humanity to the valley of Kashmir.